Good evening class. So there was slight error in the previous class जिसमें I think there was also voice of आज तक, so we are correcting that up और साथ साथ आपका revision भी हो जाएगा in the new lecture. So what we were talking about, we will discuss the economic survey. So what is this economic survey all about? First of all, who publishes it? It is published by the Economics Department of India, Finance, Planning and Economics and Statistics Department, and the signatory who is there is Anil Kumar Khachi. So he is the person who have published it. चलिए next move करते हैं. There are only 22 sections और we will try to cover. अब रिवीजन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एरर इन द सॉफ्टवेयर. पहले जो एरर था उसकी वजह से दो साउंड्स मिक्स हो गई थी, तो अब वी विल अगेन अपलोड द सेम लेक्चर और इसके बाद लेट्स सी हम आज कितने कवर कर पाते हैं. चलिए सो फर्स्ट पार्ट जो कवर करते हैं वो है जनरल रिव्यू. सो सबसे पहले द जीएसटी. इट इज मेंशन्ड अबाउट जीएसटी. द जीएसटी हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 1st of July 2017 and there was consequent change in tax structure. The tax structure change was in the form of that all the indirect taxes were subsumed into one tax, that is GST. Of course there are exceptions, but you need not to remember them. The next one is the growth was receding, and why did it recede? Due to the reforms that have been implemented. और वो कौन कौन से दो reforms थे? GST and demonetization. So in 2017-18, the economy has grown by 6.7%. So I will not be calling it 2017-18. I will calling it at fiscal year 18 क्योंकि financial terms में this is fiscal year 18. So fiscal year 18 में जो growth rate जो था वो कितना था? 6.7%, and fiscal year 19 the expected growth rate is 7.2%. This is again revisioned downward to 7%. So please आप याद रखिएगा, this is the current event. 6.7% was in 2017-18 and is expected to grow 7.2%, which has been revised to 7%. अब 7% रिवाइज किया गया है because of the growth of Indian economy in the last quarter, and it is I think merely close to 6.6%. चलिए, but however let's talk about the long term scenario. So in long term the growth perspective of Indian economy is positive because of the young population, which we called as a demographic dividend. The second one is the corresponding low dependency ratio, means how much people are earning and how much people are only consuming. अगर बुढ़ों की population ज़्यादा हो जाएगी then we will have high dependency ratio, और बच्चों की और बूढ़ों की ज़्यादा population हो जाए. The next is health saving and investment rate. So health saving and investment rate also one of them, and the increasing integration into the global economy. So global economy में जो increasing integration है that is also mentioned here. चलिए आगे move on करते हैं. The Indian growth story is the firmly established with the fact that this growth is diversified in all the sectors. So सारे के सारे सेक्टर में है and all the parameters are under our control. कौन कौन से वो पैरामीटर? Fiscal deficit close to 3.2%, current account balance, and inflation is under control. Inflation is also under control, and despite the rise in the global crude price, and it is increasing day by day. So फैक्ट की बात करते हैं. आई होप यू नो व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट आर कांस्टेंट प्राइसेस एंड व्हाट आर नॉट कांस्टेंट प्राइसेस. सो जीडीपी फ्रॉम द बेस ईयर एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर फिस्कल ईयर 18 is 130.11 lakh crore. Okay, so we have final estimate for fiscal year 18 only. So last year का जो डाटा है we have compiled that data and it is mentioned here that 130.11 lakh crore as against 121.96 lakh crore. I hope you remember this. और current price पे what we have for fiscal year 18, 167.73 lakh crore and 152.54 lakh crore. Okay, and the increase is 10% during the year. So increase from here to here is 10%, and this is on the basis of current price. For which year? This is for 16 and 17. सॉरी 17 and 18. सो 16-17 से 17-18 के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है? 10%. सो जीवी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, दिस इज नोन एज सॉरी माइनस टैक्सेस. जो भी हमारे पास टोटल आउटपुट रह जाती है वो क्या आ जाती? ग्रॉस वैल्यू एडिशन. सो बेसिक प्राइस पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितनी है? 6.5%, और ऑल्सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेस, इट इज ऑल्सो 6.5% for fiscal year 18, and for fiscal year 17 it is 7.1%.
Now the growth rate in the gross value addition during 17-18 has been lower. Why it has been lower? Because of the lower growth in agriculture sector and in manufacturing sector and in real estate. So these are some of the issues that are there. The next is the per capita income. Now what is per capita income? That how much every person in India is earning. So how much they are earning? So in 2017-18 at current prices for India, this is only we are talking about India. India के लिए जो per capita income है current price पे is 1,12,835 rupees, and in 2016-17 it was 1,03,870, and the growth rate for the per capita income is 8.67%. So please remember, जहाँ पे भी growth rate की बात आएगी, जिधर भी growth rate की बात आएगी, we will try to talk about what from last year to next year. ठीक है? So per capita income in the real terms mean on base prices of 2011-12 estimation is 86.668 for fiscal year 18 as compared to 82.229 for fiscal year 17, and growth rate of 5.54%. This is not so important. So growth rate was expected for fiscal year 19 at around 7.2%, downward revision to 7%. And please remember, if we have notes already made, try to study them in correlation with the various projections given by the different agencies. IMF have given a growth prospect, our government have given a growth prospect, and World Bank is also has given a growth prospect. So तीनों का आप रख लीजिए कि what countries and world agencies are talking about India. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. इन्फ्लेशन जो है wholesale price index is given by the government agencies, and it is given by the detail on the basis of the which मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास एक कंपनीज की लिस्ट होती है दैट हाउ मच ग्रोथ दे आर कंडक्टिंग, और उसके बेसिस पे दे ट्राई टू गिव द इन्फ्लेशन, एंड सीपीआई इज गिवन बाय सीएसओ. सो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. 3.8% है, सो यू कैन इजिली रिमेंबर. चलिए अब इकोनॉमिक सिचुएशन हिमाचल की बात करते हैं. सो इकोनॉमी इन द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 7.3% in the current financial year. So we are expected to achieve 7.3% growth rate, okay, for 2018-19, and in 2017-18 we have achieved how much growth? 6.5%. चलिए, तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस इज एस्टिमेटेड एट 1,36,000 crore फॉर फिस्कल ईयर 18. So this is a estimation, first estimation or budget estimation you can call it. So fiscal year 18 के लिए estimation कितनी है? 1.36 lakh crore, and for fiscal year 17 it was 124.122 lakh crore, and this is basis on the current prices. Now at constant prices we are at 1.09 lakh crore for fiscal year 18 and 1.03 lakh crore for fiscal year 17. I hope you remember this. So in 2017-18 जो हमारी growth है that is 109,746, and for 2016-17 this single growth, the GDP is GSTP, gross state domestic product is 1,03,000, and this growth is on the basis of 6.5%. 6.5% where he had for fiscal year 18. So 17 से 18 में 16-17 और 17-18 इन दोनों के बीच का जो ग्रोथ रेट है वो इट इज 6.5% यहाँ पे है, एंड ड्यूरिंग द ईयर एज अगेंस्ट द ग्रोथ रेट ऑफ 7.0% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. So before that we have a growth rate of 7.0%. So from growing to 15-16 to 16-17 it was 7.0. ठीक है. So whole year के it will not be there. It was all, मतलब आपके लिए हमेशा मैटर करेगा डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि मार्च टू मार्च जो है वो फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है. सो 16-17, 17-18, 15-16 and 16-17, these are two the things from which the difference will be calculated. But ultimately if we talk about 6.5%, we will calculate it for fiscal year 18. okay, so fiscal year जो फाइनल है, जो टॉप का बेस है, हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कहाँ चला गया,
ये है 6.5%। 16-17 से हम कहाँ जा रहे हैं, 17-18 में, बट व्हाट वी विल कॉल इट ग्रोथ रेट ऑफ फिस्कल ईयर 18, वी विल कॉल इट ग्रोथ रेट ऑफ फिस्कल ईयर 18। चलिए, so next, so maximum growth this year, the estimate that we have, what is the estimate we have, 7.3%. so will be attributed to the maximum growth in 20.4% in community and personal services and 4.5% in finance and real estate, 3.5% in transport and trade. जो फूड प्रोडक्शन है which was 15.63 lakh metric ton in 2016-17 has decreased to 15.31 lakh metric ton. so हमारी जो फूड प्रोडक्शन है it has been decreased. चलिए इसको आगे करते हैं. एग्रीकल्चर, आई थिंक तो की वैल्यूज आ गई है. सो जो पर कैपिटा इनकम है एट करंट प्राइसेस was what 1,60,711. so you please remember हमारा जो per capita income है is greater to the per capita income of India at current prices, and if it is larger than current prices then it will also be larger at constant prices. so this is what we have, and for 2018-19 for fiscal year 19 the growth is expected at 7.3%. so 160 किस में है, fiscal year 18 में, and 149 किस में होगा, fiscal year 16 and 17 में. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. सो फूड गेन प्रोडक्शन कितनी है फिस्कल ईयर 17 में, 15.3%. फूड गेन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है अप टू 15 मेट्रिक टन, और दिस इज इन लाख टन, 15.63 लाख टन एंड 15.31 लाख टन. फूड प्रोडक्शन जो है इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन हाफ ऑफ इट, 6.2 and it is 5.65. this is 3 time difference here. This is little lower than 2 times, but this is 3 times. so gross value added from the industrial sector is 33,000. now the industrial sector has been increasing to 37,000. please remember this. चलिए आगे की बात करते हैं. so this is I think agriculture sector. okay, so growth is predominantly governed by agriculture, और जैसे ही एग्रीकल्चर में फ्लक्चुएशन आती है देयर इज सॉरी फॉर दैट, जैसे ही फ्लक्चुएशंस आती हैं सो देयर इज व्हाट द रिपरकशंस आर फेल्ट इन ऑल द अदर सेक्टर्स. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था कंट्रीब्यूशन का किसका, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का. तो ये जो है ये आज की डेट में फ्रॉम 1951 इट वाज क्लोज टू 60%. नाउ इट हैज बीन डिक्रीज टू 8.8%. द नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन सर्विस सेक्टर. सो इट वाज हमारे यहाँ पे जो शुरुआत में 1991 में इंडस्ट्रीज ओनली 1.1% दे वर कंट्रीब्यूटिंग, बट नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग 29.2% एंड 43.3% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर. प्लीज आप इसको याद रखिएगा कि हाउ मच sector contributes how much. चलिए, economic growth is still being determined by trend agriculture, already told you. Now what are the overall impact because of input linkages, employment and trade generation due to lack of irrigation? These are some of the things that we have to depend upon, and timely rainfall and weather conditions are to another thing. So we have also strived in cultivation of temperate to subtropical fruits. किन्नू, लीची, guava, apple, peach, these are some of the fruits that are grown in HP. चलिए, hop is a thing that is used in manufacturing of liquor, if I remember correctly. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. So 2018 में 4.6 lakh ton of fruits were produced, and it is envisaged to bring 2004 hectares of additional area under fruit plant as against 2351 hectare of area has been already brought. So 2004 hectare of additional area fruit plants के अंदर हमने लाना था as against 2351. So we are achieving over targets. So off season vegetables are also growing, and the vegetable total production is 16.54 lakh ton. So it is close to which? Close to the food grain production.
if you remember, this is the food grain production, 15.63 and 15.31, and it is in lakh ton. So off-season vegetable are also produced close to 16.54 lakh tons in 2016-17 and is recording a growth up to 16.92. So in terms you can also remember कि vegetable की जो growth है is 1 lakh ton more as compared to the food grains, and food grains से 1/3. Okay, so if it 15 metric ton or 15 lakh ton याद रखिए food grain की production 15 metric ton से 1/3 किसकी production है, 5 metric ton किसकी fruit production. नाउ फर्दर सेक्शन हम आगे करते जाएंगे कि फ्रूट में भी कितनी प्रोडक्शन किसकी है, सो उसकी बात बाद में करेंगे. अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए. एंड पावर सप्लाई इन द स्टेट इज ऑल्सो बीइंग एश्योर्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश टेरिटरी. Now the private sector participation in the term of investment in this sector has been encouraging, but the smaller projects has been reserved for investors from Himachal only up to 2 megawatt. So 2 megawatt तक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं will be only allotted to Himachali people, and preference will be given for 5 megawatt and above 5 megawatt there is competitive bidding on the basis of the who scoreless और डिफरेंट तरह के मॉडल हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर कि किस बेस पे बिडिंग की जाती है. देयर इज रिवर्स बिडिंग, देयर इज फॉरवर्ड बिडिंग, सो डिफरेंट तरह की बिडिंग है. वी विल नीड नॉट टू गो इनटू देम राइट नाउ. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. जो नेक्स्ट है वो है टूरिस्ट अराइवल. सो यू सी टूरिस्ट अराइवल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फॉर 2018 एंड इट इज ओनली क्लोज टू 1.60 करोड़. सो 1.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट इंडियन हैव अराइव्ड एंड द फॉरेनर्स आर declined very big. So in 2018 only 3,50,000 arrived and the total is 164. So 2 crore से 1,60,000. So 40,000 का loss we are suffering in only one thing. So annual plan. Now why this annual plan has been introduced? Because the 5-year plan has ended in 2017. So after that only annual plan are proposed, and 7,100 crore has been allotted, in which social sector has been allotted the maximum amount of money, social services. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, 2.3%. अगर फिर भी इफ यू वांट टू रिमेंबर, सो इट इज CPI वर्किंग क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2018-19 इंक्रीज बाय 2.3% इन नवंबर 2018 एज अगेंस्ट 4.9% एट नेशनल लेवल. सो नवंबर में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वॉज 2.3%. चलिए, सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इज मेकिंग वेरियस स्टेप. सो व्हाट आर द वेरियस स्टेप? सो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज इम्प्लीमेंटेड गुड गवर्नेंस इंडेक्स. और इसके फीचर क्या है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के? अवेलेबिलिटी ऑफ द, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट इज शक्ति बटन ऐप एंड गुड़िया हेल्पलाइन. सो शक्ति बटन ऐप इज फॉर द हेल्प ऑफ गर्ल्स हु आर इन डिस्ट्रेस, and the next is Gudiya helpline, and the Gudiya helpline has been launched by government of Himachal Pradesh and the number is 1515. Please remember to deal strongly with the Hoshiar Singh helpline 1090 it is. The next is the Him Pragati has been started for monitoring of the welfare scheme, employment generation and Janmanch. The next is EPDS. EPDS mean application has been provided on which you can check about how much amount of ration you will get and how to get subsidized ration. The next is आज पुरानी राहों से. Now what are the main focus of आज पुरानी राहों से? It has two-fold approach. Number 1, to promote the ancient culture heritage, and number 2, to give employment opportunities to the local youth and promote them to become the cultural guide. चलिए, but there is also issue regarding the tourism कि जो lower strata of the society cannot be trained to acquire those hospitality skills. So there is some drawback here, but इसके बारे में we will talk about in tourism. So point of sale has been installed at every other fair price shop. New women police station here सोलन, चंबा एंड हमीरपुर. कहाँ बनाए गए हैं? सोलन, चंबा एंड हमीरपुर. किस क्राइटेरिया पे बनाए गए हैं? We do not know.
सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन थी हैज़ बीन फॉर दैट एज हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 80 years to 70 years, and social security pension has been increased to rupees 750, and any person who is 70% specially abled eligible person will be granted 1300 per month. जो disabled person है, specially abled eligible person has been enhanced to 1300. Okay, pension of age 70 years and above and 70% specially able eligible persons have been enhanced to 1300. Maternity leave for 26 weeks or 128 days. Minimum wages increased from 210 to 225. Janmanch, in which Prime Minister or ministers will sit in the villages or in the constituencies across the state. And recently they have also proposed to sit in the district headquarters. चलिए नेक्स्ट, नर्सरी एंड केजी हैज बीन सेट अप एट different schools, and in schools from first class to plus 2 class 9 lakh students will get smart uniform and 2 set of those. 137 degree colleges has been made with free Wi-Fi facility. The next one is the HIMCARE scheme. पर पहले आयुष्मान भारत के बारे में बात कर लेते हैं. So आयुष्मान भारत have 2 components. One is National Health Protection Scheme and another is Jan Arogya Yojana. I hope you remember this. Whether it is Jan Arogya Yojana or something else. चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी. I need to confirm this. But Ayushman Bharat has one fix, that is NHPS, and the second one is the establishment of the wellness centers. कि wellness centers जो है वहाँ पे आपको डॉक्टर मिलेगा and you can go to them and ask for medical treatment. So on the same basis, HIMCARE scheme has been implemented to cover those persons who have been left out. Okay, जो आयुष्मान भारत से बाहर किसी वजह से रह गए हैं. So medical test facility to citizen, मुख्यमंत्री निरोग योजना has been launched, and under this scheme 130 wellness center will be set up in the state. I think it is Jan Arogya Yojana or Nirogya Yojana, I think something like that, in which wellness center will be set up all over the India. So bike ambulance service has been started, and Himachal Pradesh has become the first state to start something like that. Karnataka is the first state who has started what? Karnataka has started the first bike ambulance. चलिए नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं. सो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड टेलीमेडिसिन फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड हियर शिमला, सिरमौर एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ किल्लर. प्लीज रिमेंबर दिस, शिमला, सिरमौर एंड चंबा, क्योंकि शिमला, सिरमौर और चंबा में ट्राइबल एरियाज हैं. किन्नौर में अपने, बट इन किन्नौर इट हैज नॉट बीन स्टार्टेड. आई थिंक इन करंट अफेयर्स देयर वाज सम न्यूज इन व्हिच फैसिलिटीज आर आल्सो एक्सटेंडेड टू किन्नौर. I will update that in current affairs. पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि शिमला, सिरमौर एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये अप्लाई करा गया है. योगा फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड इन 471 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स. चलिए नेक्स्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड आर ऑल्सो बीन मेड, एंड एम किसान पोर्टल. नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन ऑल्सो. लास्ट टाइम भी आई थिंक आई हैव रिकॉर्डेड द सेम लेक्चर in which technical information to horticultures of the state has been provided. It should also be included that farmers are also provided. Heli taxi service from Chandigarh and Chandigarh to Shimla helicopter ke through. The next one is the Mukhyamantri Swavlamban Yojana, 25% subsidy up to the limit of 40 lakh, and for rural youth and who are not engaged in any of the working. The next is 30% subsidy for SC, ST and women entrepreneurs. The next is Mukhyamantri Startup Yojana, in which 27 startup has been started in 8 incubation centers and 3 promising entrepreneurs has been awarded. So NDRF की एक battalion we have raised here. This is a big achievement for Himachal Pradesh because a disaster occurs almost every another year because of the landslides or because of the rivers. So floods जो हैं उनको काउंटर करने के लिए इट्स बेटर दैट वी हैव अ डेडिकेटेड डिजास्टर रिएक्शन फोर्स हु विल बी ट्रेन्ड, एंड
will be able to deal with some of the things. चलिए नेक्स्ट इज देवभूमि दर्शन योजना. सो इसके अंडर क्या है, 70 ईयर्स से ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन हैं, इफ दे आर गिविंग टू द रिलीजियस प्लेसेस, दे विल बी टेकन फ्री. 3 prizes has been received by HP from प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. इनमें कौन कौन से प्राइजेस हैं, वी विल डिस्कस इन करंट अफेयर्स. एंड फर्स्ट प्राइज फॉर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. सो ग्रामीण आवास योजना में आई थिंक दिस इज धर्मशाला और हमीरपुर, आइदर ऑफ द टू. आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर इन दोनों में से है कौन, बट ग्रामीण आवास योजना में इन्हीं में से एक है. सो ऑल्सो फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, 4 prizes we have received. Now the per capita income has touched the level of 160. Now 160 it is based on current prices, and it is witnessing a growth of 7.8% for fiscal year 17, and it will be approximately close to 1,76,968. चलिए, now here we talk about revenue receipts 2, 3, 4. Tax revenue, non-tax revenue, I hope you remember, and grant in aid. So revenue receipt in fiscal year 16 was 23,440. Now it has been increased to 30,400. So tax revenue is 14,635. Now tax revenue consists of two things: state's own tax and tax that has been attributed or being devolved by the center to the state. So यहाँ पे दो तरह के टैक्स इंक्लूड होंगे. सो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स से नहीं आता है. नॉन टैक्स रेवेन्यू किस तरह का, द रॉयल्टी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, और किसी तरह की सर्विस, किसी तरह की चार्जेस. नाउ ग्रांट इन एड इज अगेन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट्स आर ऑन द पेमेंट ऑन दोज थिंग फ्रॉम विच वी हैव टेकन लोन अर्लियर. सो दीज आर इंटरेस्ट पेमेंट्स. दिस इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 33,568. That is also in crore, 33,000 crore. So revenue, whether we are surplus or whether we are deficit. So we were surplus in 15-16 and we were surplus in 16-17, but in 17-18 we are in deficit on the revenue account. So capital receipts are very small in HP, 7,765. These are long-term receipts that you are going to receive after 5 to 6 years or after 1 year. चलिए, other receipts, borrowing and liabilities, this is this much. Now the total expenditure is 41,440 for fiscal year 19. This is estimation. This was also announced in the budget last year, जब 18-19 का बजट अनाउंस करा गया था. So this is 41,440. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टेट इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेट इनकम. सो डाटा सारा वही है, सीधा याद कर लीजिए. यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट प्राइस ग्रोथ 6.5% है. कितनी 17-18 के लिए, फिस्कल ईयर 18 के लिए 1,09,000 एज अगेंस्ट 1,03,000 फॉर फिस्कल ईयर 16-17. सॉरी फॉर दैट. सो क्विक एस्टिमेट जो है वो करंट प्राइसेस के लिए कितने हैं, आई थिंक 136 फॉर फिस्कल ईयर 18 के लिए, एंड फॉर फिस्कल ईयर 16-17 के लिए 125. सो 136, 1,36,000. चलिए, सो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कितना है, 15.31 lakh ton, एंड इट हैज बीन डिक्रीजिंग. एंड हियर एज द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल डिक्रीज टू 4.47 lakh metric ton in 2017-18 for 4.68 lakh metric ton. So एप्पल की प्रोडक्शन भी डिक्रीज करी. Now all the food production I have told you how much it is, close to 5 lakh metric ton. So you see how much amount of apple consists of fruit. तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं. So agriculture sector have contributed how much, 8.84%. So economy of the state are resilient mode. Resilient means something that cannot be broke up, और जो आसानी से हार नहीं मानता, that is called as resilient. For 18-19 the estimation is 7.3%, and for India estimation is 7.2%, which have been further down revised by Indian government to 7%. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं.
चलिए per capita income. Now per capita income on current prices is 1,60,000. अगेन वही डाटा 149. उसके अलावा एंड कैपिटल पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू बेस प्राइसेस इज 1,25,000 for fiscal year 18 and fiscal year 17 is 1,18,000. Now we will talk about sectoral distribution. So primary sector 13%, secondary sector 43%, and the last one that remains is the tertiary sector: finance, personal services, community services and transport services. We will do again the last time, जैसा हमने last time किया था. We will compare. Okay, so there are three sectors: primary, secondary and tertiary. So in real terms, who is the biggest contributor? Secondary sector. Please remember how much it is contributed: 47,819 crores. And after that, what is the another one? 43,220 by the tertiary sector. And the lowest contributor is the agriculture. I hope you please remember this. So 13,738 is the lowest. And in primary sector, you see the growth is on the negative side. So we have actually decreasing. Mining and quarrying is 9.8%. So this is maximum here, and the maximum negative is forest and logging projects. So इसीलिए we have also introduced forest and logging को टैकिंग करने के लिए in the budget we have introduced वन समृद्धि जन समृद्धि. Please remember this. जो भी नेगेटिव होता है we will try to work on it. And agriculture and animal husbandry. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई की. So electricity, gas, water supply में HP government have also introduced one more thing in which for the first 12 years the royalty has been waived off. Not royalty but free electricity. तो उसके बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे. प्लीज़ आप याद रखिए कुछ एक सर्टेन डेवलपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आ रखी है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ग्रोइंग इन मैक्सिमम 8.5%. कंस्ट्रक्शन इज एट मिनिमल. चलिए नेक्स्ट अब जो बात करते हैं जो ग्रेटेस्ट सेक्टर दैट इज ग्रोइंग इज कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज एट 20.4%. सो दीज आर मोस्टली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP. सो प्रोवाइड कर रहे हैं तो चल रही है. एंड प्लीज रिमेंबर मैक्सिमम ग्रोथ किसकी है? कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज की. अगर वी टॉक अबाउट सेकेंडरी सेक्टर में मैक्सिमम ग्रोथ किसकी है? मैन्युफैक्चरिंग की. एंड वी टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर, इट इज इन नेगेटिव. एंड इन प्राइमरी सेक्टर मैक्सिमम ग्रोथ इज फ्रॉम माइनिंग एंड क्वेरिंग. Mining mainly consists with the cement plants and quarrying the salt. Salt mines are also opened. HIMSALT, I think HIMSALT was the one who was operating it. Forest and logging. So forest and logging is on the negative side. Fishing, we are only acquiring how much? 88 crore rupees. So please ये तीनों चीजें याद रखिए. Secondary sector 47,819. चलिए देयर इज नॉट मच टू रिमेंबर. और इसके अलावा वो हाँ परसेंटेज शेयर रहेगा. परसेंटेज शेयर इज नॉट मेंशन्ड. सो सेकेंडरी सेक्टर 40 सॉरी टर्शियरी सेक्टर 43.26. प्लीज रिमेंबर. ओके. एंड 43.01% is the secondary sector. Please remember this. So these are very close. So maximum contribution is by the tertiary sector. I think there has been a mistake here. देखिए 17-18 में there is 43.3 sector which is tertiary. This should be 47. It can't be 43, it should be 47. Just a sec. Let me confirm this. Either this should be 48%. चलिए आप इसको अभी छोड़ दीजिए. प्लीज रिमेंबर कि जो आई थिंक देयर इज सम एरर है और आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट. चलिए छोड़िए. बट
जब मैं कंफर्म कर लूँगा आई विल पुट अ टेक्स्ट अबाउट इट. इफ यू हैव लिसन टू द लेक्चर यू विल एबल टू लिसन टू द टेक्स्ट, अदरवाइज ऑल्सो आई विल ट्राई टू मेंटेन अ सेपरेट नोट आफ्टर कंफर्मेशन, जब इसकी कंफर्मेशन कर ली जाएगी. अभी आगे मूव ऑन करते हैं लेक्चर को बिना रोकते हुए. सो फाइनेंस एंड रियल एस्टेट 4.5% it is increasing. This is only this has been explained here. And community and personal services, please remember this is 20.4%. चलिए, so what are the prospects for 2018 and 19? That we will grow at 7.3%. Earlier in 17-18 we have achieved 6.5%, and earlier we have achieved 7.0%. So these are three things: 7.0 to 6.5 to 7.3. And the GSDP at current prices is 151.83 crore. This will be the prospect for 2018 and 19 at current prices. Just a second, let me make a note of it. Fiscal year 19, 51.835 crore. So we are increasing from how much? 1.36 lakh crore to 1.51 lakh crore. And the per capita income has been projected to increase at 1.76 lakh. This is a huge increase in per capita income. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट प्लान, थर्ड प्लान, एंड आफ्टर 12th प्लान यू सी एनुअल प्लान. 17 में जो 5th ईयर प्लान था हैज बीन डिक्रीज्ड. सो उसकी ग्रोथ भी वी आर मेजरिंग. जो इस बार का एनुअल प्लान है कंसिस्ट ऑफ 7100. लास्ट वन वाज 6300. चलिए, नाउ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड दैट वी हैव गॉट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, 30,400 crore in fiscal year 18 and 19. So this is budget estimate that in fiscal year 19 we will receive how much amount of money? 30,400 crore. And state owned tax in that are 8,248 crore. Please remember this. कितना है? 8,241 crore in. This is budget estimate for fiscal year 19. So 18-19 का जो बजट था उसमें जयराम ठाकुर ने, when he was delivering the budget in the last year fiscal year 18, he have told that we are supposing that we will get 8,248 crore in state's own tax. And in last year for fiscal year revised estimate it was 7,864 crore. चलिए, सो नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर आई हैव टोल्ड यू कौन कौन सी रिसिप्ट्स की वजह से, पावर रिसिप्ट्स की वजह से, पावर रिसिप्ट द सेम इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट रिसिप्ट की वजह से, रोड ट्रांसपोर्ट में जो हम टैक्स लेते हैं वो. सो नॉन टैक्स रेवेन्यू वाज 6.52% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. सो ये भी याद करने की जरूरत है नहीं. द ब्रेकअप ऑफ स्टेट ओन टैक्स रिवील दैट द सेल टैक्स कंस्टिट्यूट्स 44%. सो स्टेट टैक्स जो है उसमें सेल टैक्स जो है कंस्टिट्यूटिंग 44.63%. ओके, सो सेल टैक्स हैव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन स्टेट्स ओन टैक्स. ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट में देयर आर टू आइटम्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स. इन टैक्स आइटम देयर आर ऑल्सो टू आइटम्स, स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स. सो इन स्टेट टैक्स देयर इज ऑल्सो ब्रेकअप ऑफ सेल्स टैक्स, okay, and some of the goods and services tax, and there are state excise duties. So in that, sale tax have the maximum portion amounting to 44.63%. Please remember this कि 44 contribution किसका है? सेल टैक्स का. चलिए, सो स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटीज कितनी है? 1,426 करोड़. इसको याद करने की जरूरत नहीं है. So revenue surplus was 0.74%. So in revenue department here, revenue deficit was 1.92%. 0.74% किसमें था? 16-17 में. I have already told you कि हम किसमें थे? पॉजिटिव में. पर 17-18 में we are in deficit. So 17-18 and 18-19 for both year we will be in deficit. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड बैंक फाइनेंसेस. चलिए इसको थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करते हैं.